to continue with chapter number 16, which is kinematics of a rigid body. Now, in the last lecture, we initially started with the types of motion which a rigid body can undergo within a plane. We studied three different types of motion. The first one was translation, the second one was rotation, and the third one was general plane motion. Sorry. So in case of translation, हम कहते हैं कि the original orientation of that rigid body is not going to change in case of translation. So if you pick any line segment of that rigid body, its orientation would remain same throughout motion if it is in translatory motion. Translation में फिर हमने देखा था कि there are two different types of translation. The first one is rectilinear translation and the second one is curvilinear translation. डिफरेंशिएट हम किस तरह करते हैं अगर हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन की बात करें तो इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन इफ यू पिक एनी 2 points of that rigid body, so tracking those 2 points are going if tracking those 2 points अगर आप उन points को track कर रहे हैं and those points forms equidistant straight lines, then that type of translation is termed as rectilinear translation. However, if that body is under curvilinear translation, so जब आप उन दो points को किसी भी दो points को track करेंगे तो they are going to form parallel lines but in a curve path. So अगर वो straight line path बनाएं तो then they are basically rectilinear translation. However, if they form curved lines, then they are basically then that rigid body is basically in curvilinear translation. However, in both these cases, the orientation of that rigid body is going to remain same. It will not change its orientation when it is in translation. The second type of motion which we studied was rotation. In case of rotation, all the points on the rigid body except those which lies on the axis of rotation are going to form circular paths. इसके मुकाबले में जो जनरल प्लेन मोशन होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स मोशन भी कहते हैं, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ translation and rotation. So if a rigid body is undergoing simultaneous translation and rotation, then we can say that that rigid body is basically performing general plane motion. Then we started developing some mathematics of translation first of all, और हमने देखा था कि whenever a rigid body is in translatory motion, then all the points on the rigid body are going to translate or are going to move with the same velocity and acceleration. So all the formulae of rectilinear motion of a particle which we studied in chapter number 12 at the start of this course are equally applicable on a rigid body which is in pure translatory motion. Then we started with the second with developing the mathematics of second type of motion, which is the rotational motion. In case of rotation, we studied that the angular velocity of that rigid body which is performing rotational motion is going to be equal to omega equal to d theta over dt. So if theta is given to you as a function of time, then you can differentiate that theta with respect to time once in order to find out this angular velocity omega. Similarly, the angular acceleration, which is represented as alpha, it can be determined by taking a second time derivative of theta as well. So, अगर आप theta as a function of time known है, उसको एक दफा differentiate करें, you are going to get omega as a function of time. एक और दफा differentiate करें, you are going to get alpha as a function of time. Now, the line of action of alpha and omega, however, it's the line of action of alpha and omega is same. However, its sense जो है वो डिफाइन करेगी कि ये रिजिड बॉडी जो है ये एंगुलरली एक्सेलरेट हो रही है, ये एंगुलरली डिसेलरेट हो रही है. देन फ्रॉम दोज टू इक्वेशंस इफ वी एलिमिनेट dt, then we are going to get a third kinematic equation for rotation, which is alpha d theta equal to omega d omega. Now this equation is going to be used for solution of all such problems in which alpha is given to you as a function of theta rather than as a function of time, and you are being asked to find out omega. So for such problems without involving the time variable, you are going to use this equation in order to relate alpha, theta and omega. Then in a similar fashion, just like the motion of a particle with constant linear acceleration, if that rigid body is moving with a constant angular acceleration, that is alpha equal to alpha c, then we derived these three constant angular acceleration equations last time by putting the relevant boundary conditions for a rigid body which is in pure rotational motion. Now the similarity between these equations and the equations for constant acceleration are that wherever you found v, that those equations replace that v by omega. Similarly, s को आप replace कर दें theta से और a को आप replace कर दें alpha से, तो then you are going to get the equations for constant angular acceleration for a rigid body, which is equation 5, 6 and 7. So whenever a rigid body is rotating with constant angular acceleration, you are going to use directly these equation 5, 6 and 7 for analysis. However,
if that rigid body is rotating with a varying angular acceleration, either alpha as a function of t or alpha as a function of theta, then you are going to use the general three kinematic equations which are being discussed earlier in this lecture. I hope कि यहाँ तक तमाम चीजें clear हैं देखो. जी कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दे. Yes, sir. Okay, now moving on to today's lecture. In today's lecture, we are going to consider, we are going to consider the rotational motion again, but we are going to find the linear velocity and acceleration of any point on that rigid body. अभी हमने angular velocity और angular acceleration की तो बात की है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि उस rigid body की किसी भी एक point की linear velocity या linear acceleration जो है वो determine कर दें, v और a determine कर दें, तो फिर वो किस तरह करना है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे. So in order to derive the relationship of VA with alpha and omega, let us consider a rigid body which is rotating about its centroidal axis as shown to you in the figure. As the rigid body rotates, we have discussed earlier as well, since it is in pure rotation, therefore any point P on this rigid body is going to travel along a circular path with radius r and center of rotation at point O. Now the position of this point P is defined by using the same position vector r. So this position vector r is basically used to define the position of this point P. And since we are considering it as the xy plane with z axis outside this plane, so this r vector is going to be of the form xi plus y j. यानी आपसे कहा जाए कि इस r या पोजीशन वेक्टर को लिखें, तो चूंकि आप xy प्लेन वही रिजिड बॉडी का प्लेन ले रहे हैं, तो this r is going to be of the form xi plus yj. The position of P is defined by this position vector r, which extends from point O to point P, and it would be of the form vector form r vector equal to xi plus yj. Okay, now in order to define the velocity of this point P and the acceleration of this point P, let us use the same coordinate system जो कि हमने इससे पहले chapter number 12 में इस्तेमाल किए थे. So the velocity of point P has a magnitude which can be determined by the circular motion of point P using its polar coordinates VR and V theta. If you remember, अगर chapter number 12 को हम थोड़ा सा रिवाइज करें, उसमें आपको यही कहा गया था कि in case of polar coordinates, the velocity would have two components, the radial component of velocity and the transverse component of velocity. The radial component of velocity would have a magnitude of r dot, and the transverse component of velocity would have a magnitude of r theta dot. So अगर हम radial coordinate की बात करें, r dot क्या है इस केस में? Can you identify it from the figure? 0. Yes, since it is a rigid body, so this vector r would have the same magnitude. There isn't going to be any change in its magnitude. So r dot is going to be equal to 0. In other words, the total velocity is going to be found using the transverse component of velocity, which is v theta equal to r theta dot. But what is r theta dot? But what is theta dot? Theta dot क्या होता है? W omega जो है. So theta dot is basically omega. So whenever you are being asked to determine the velocity of any point on the rigid body which is undergoing rotational motion, the magnitude of that velocity is going to be determined using the relationship v equal to omega r. यानी उसकी जितनी भी angular velocity आपको given होगी, उसको आप radius of rotation से multiply कर दें, you are going to get the magnitude of that linear velocity. So whenever you are being asked to determine the magnitude of linear velocity, it is going to be omega r. However, in certain cases, you will be asked to determine the velocity vector rather than its magnitude only. So if you are being asked to determine the velocity vector v, then that velocity vector v can be determined by taking the cross product of omega and r, that is v vector equal to omega cross r. And if you remember, statics में याद है क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते थे, then omega cross r is not equal to r cross omega. So whenever you are asked to determine the velocity vector, it is going to be omega vector cross r vector. So इस तरह आप जो है वो velocity vector जो है वो determine कर सकते हैं. अगर आपसे खाली magnitude पूछा जाए, तो then the magnitude of velocity of any point P located on that rigid body which is undergoing rotational motion is going to be omega r, where omega is the angular velocity of the rigid body and r is the radius of rotation. However, if you are being asked to determine the velocity vector, then that vector can be determined by taking the cross products of omega and r. So omega cross r is going to be used for finding this velocity vector. Okay, अब थोड़ा सा अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो आई होप कि स्टैटिक्स याद है. अब आप ये भी नहीं कह सकते कि स्टैटिक्स में हमने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था, बिकॉज स्टैटिक्स में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था. हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन दिस क्रॉस प्रोडक्ट? एनी आइडिया? कुछ याद है आपको?
तो ये sin थीटा होता है क्या? थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश कर लें, ये जो आप बता रहे हैं ये तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो cos थीटा होता था। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ये याद तो है तकरीबन। मेथड ऑफ डिटरमिनेंट से। ओके, क्या है वो मेथड ऑफ डिटरमिनेंट? यहाँ चलें हम बात करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे यहाँ ओमेगा क्रॉस आर है, सो देयर आर टू डिफरेंट methods of taking the cross product. सबसे पहली बात तो ये कि in order to take the cross product we need to write omega and r in terms of vector form, isn't it? So can you write omega in terms of vector? And how you can write this omega in terms of vector? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ये। IG के अंदर मालूम करेंगे कि along positive y axis है कि नहीं। देखिए, if I am going to consider this plane as my xy plane and this is going to be my z axis, so how can we write this omega in terms of vector, unit vectors? IG और K के उसके अंदर नहीं। Remember this right hand rule which we discussed last time? Yes sir. What is this right hand rule? If you curl your fingers of right hand in the direction of rotation, then thumb is going to point out in the direction of omega as well as alpha. So if that body is rotating in a counterclockwise direction, you are going to rotate your thumbs in a counterclockwise direction. This thumb is pointing towards the positive z-axis. So in that case, you can write omega to be equal to omega k. However, if the rigid body is rotating in a clockwise direction, then the thumb is pointing towards the negative z-axis, and you can write omega to be equal to minus omega k, isn't it? Yes sir. Right hand rule clear है रेक को? जी sir. Yes sir. Okay, so using that right hand rule, we can write omega, which is counterclockwise here, to be omega k cross position vector r. हमने पिछली स्लाइड पे लिखा था, it is of the form xi plus yj. So you are going to take the cross product of omega k cross xi plus yj. So the first method of taking this cross product is by the use of determinants. वो मेथड क्या है कि आपको ये वेलोसिटी वेक्टर डिटर्मिनेंट से डिटरमिन कर सकते हैं. What should be the first row of these determinants? IJK. It should be ijk, the unit vectors along xyz axis. So पहली रो तो आपने लिख लिया ijk. What about the second row? 0 0 So W ये ओमेगा के It should represent the components of omega. So यहाँ omega आपके पास omega k है. It means that इसका x component 0 है, इसका y component 0 है और इसका z component जो है वो omega के बराबर आ गया. What should be the third row? x y 0. It should be the components of the position vector r, which are x, y and 0 here. So just a revision आपको क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने कराई है कि एक तरीका तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का ये है कि जब भी दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, आप ये डिटरमिनेंट वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रो में आपके आई जे के वैक्टर्स आ जाते हैं, सेकंड रो में ये जो पहला वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स आएंगे, थर्ड रो में जो है आपका दूसरा वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे. तो यहाँ ओमेगा इज ओमेगा के, सो 0 0 ओमेगा आपके पास सेकंड रो में आ गया और एक्स वाई 0 आपके पास थर्ड रो में आ जाएगा. सो वंस यू एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट, अगर मैं आई की बात करूं तो आई को एक्सपेंड किया आपके पास क्या आ जाएगा? 0 0 और माइनस ओमेगा वाई. ओमेगा y. इसका मतलब चीजें कुछ कुछ याद हैं. सो आई इज गोइंग टू अब याद आ गई. अब याद आ गई हैं. ओके, जे के साथ में क्या करूंगा? सबसे पहले पॉजिटिव जे आएगा, नेगेटिव जे आएगा? नेगेटिव j आएगा. तो नेगेटिव जे आएगा और फिर जे के साथ क्या आना है? इस डिटरमिनेंट को देख के बताएं. 0 minus y minus x omega. So it is ओमेगा going to माइनस be minus j into minus omega x, and what about the third one? 0 Positive k into 0. So जब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, ये माइनस ओमेगा वाई आई प्लस ओमेगा एक्स जे आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ याद आ गया होगा स्टैटिक्स? क्लियर है सर. चलें. So this is one method of taking the determinant or taking the cross product of two vectors omega and r. There is another easier method as well, which we are going to use more often in this particular remaining course. वो method क्या है कि since you need to take the cross product of omega and r, so the second method is you are going to multiply first of all omega with this term
and then secondly you are going to multiply omega with this term. So velocity vector v would be equal to, when we multiply omega with first term xi, it would become omega x, the magnitude. What about k cross I? Do you remember this method which you have studied probably in mathematics? एक छोटा सा सर्कल आपको नजर आ रहा है एक को, जिसमें i j k लिखा है तीनों तरफ. जी सर. मैथमेटिक्स में आपने प्रोबेबली शायद ये पढ़ा होगा कि मूविंग इन अ clockwise direction, for example, I dot j would give you k, I cross j would give you k, j cross k would give you I, k cross I would give you j. So अगर आप clockwise direction में जा रहे हैं तो आपको किसी भी दो यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा यूनिट वेक्टर की पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी. इसी तरह इफ यू आर गोइंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन k cross j is minus I, j cross I is minus k and I cross k is minus j. Do you remember this method? Yes sir. अब जरा इस मेथड को अप्लाई करें पहली टर्म पे. ओमेगा एक्स आ गए, व्हाट इज k क्रॉस i? K cross I sir equal to J. k क्रॉस i is j. इसके बाद आप जो है वो सेकंड टर्म पे आ जाएं. ओमेगा y k क्रॉस j minus I. सो इस तरीके से जो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इट इज अगेन गोइंग टू बी सिमिलर टू द क्रॉस प्रोडक्ट जो कि आप डिटरमिनेंट्स के मेथड से ले रहे हैं. सो व्हिचएवर मेथड यू फील कंफर्टेबल इन टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आगे काफी क्वेश्चंस में आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वेक्टर का. यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज टू मेथड. तो जो भी मेथड ले रहे हैं काइंडली उसको करेक्टली जो है वो अप्लाई करें. आइदर यू कैन यूज दिस डिटरमिनेंट मेथड व्हिच इज शोन टू यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस स्लाइड, और यू कैन सिंपली टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो कि आपको राइट साइड पे शो किया गया है. हम अपने प्रॉब्लम में जो मेथड मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वो ये वाला मेथड है. सो आई एम गोइंग टू यूज मेथड नंबर 2 while taking the cross products of vectors throughout this remaining course. अगर आप डिटरमिनेंट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी एनालिसिस में डिटरमिनेंट वाले मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों मेथड क्लियर हैं या किसी को कोई क्यूरी है मेथड्स के हवाले से? सर. Okay, so moving back to our lecture, whenever you have a rigid body which is being in rotational motion and you are asked to determine the magnitude of velocity of any point on that rigid body, you can use this v equal to omega r for finding the scalar magnitude of velocity. However, if you are being asked to determine the velocity vector, then you are going to take the cross product of omega and r. So first of all, you need to write omega in terms of vector, r in terms of vector, and take the cross product either by using the determinant or by simply expanding this cross product. कोई भी एक मेथड को इस्तेमाल करते हुए you can determine that velocity vector. So I hope कि velocity के हवाले से तमाम चीजें क्लियर हैं. एक को लीनियर velocity को किस तरह हमने ओमेगा के साथ रिलेट करना है. Okay, now moving on to the acceleration. Acceleration के लिए let us again move to our original chapter number 12 के जो tangential और normal coordinates हैं. So the acceleration of point P can be expressed in terms of its normal and tangential components. For example, अगर हम tangential component की बात करें, so if you remember the tangential component is basically dv over dt. अगर आपको chapter number 12 थोड़ा सा याद है, it is dv over dt. अभी हम स्केलर की बात कर रहे हैं, we are not talking about vector. Vector की हम इसके next slide पे बात करेंगे. पिछली स्लाइड में व्हाट वाज द स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v? इट इज ओमेगा r. सो व्हाट इज d by dt ओमेगा r? r कांस्टेंट है. सो अगर कोई कांस्टेंट चीज डेरिवेटिव में हो तो वो बाहर आ जाती है, तो r बाहर आ जाएगा. व्हाट इज d ओमेगा by dt? Alpha. Alpha. So basically the tangential component of acceleration would be equal to alpha r. जब भी आपको कहा जाए कि acceleration जो है उसका tangential component का magnitude find out करें तो it is going to be alpha r, where alpha is the angular acceleration of that rigid body and r is the radius of rotation. Okay, as far as the normal component is concerned, you know the normal component क्या होता था? v square over rho होता था. याद आया कुछ? Yes sir. और v किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर, यानी v बेसिकली ओमेगा r है तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा. व्हाट अबाउट रॉ? Rho is R sir. Rho is also r, so ये r कैंसिल हो गया. इट मींस कि the normal component of acceleration is going to be equal to omega square r. So whenever you are being asked to determine the scalar magnitude of the normal component of acceleration of any point P which lies on a rigid body which is in rotational motion, then the normal component would have a magnitude of omega square r, and overall the acceleration would have a magnitude of at square plus an square
होल अंडर रूट। तो आपके पास जब जब एक्सेलरेशन के हवाले से कहा जाए और एक्सेलरेशन का स्केलर मैग्नीट्यूड आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो द एक्सेलरेशन vector would have a magnitude of at square plus an square whole under root, where at is equal to alpha r and an is equal to omega square r. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so the tangential component of acceleration basically represents the time rate of change in the velocity's magnitude. If the speed of p is increasing, then at acts in the same direction as v. If the speed is decreasing, then at would be acting opposite to the direction of v. ये वही चीज है जो हमने चैप्टर नंबर 12 में भी देखी थी कि आपका जो at है, it represents the change that is occurring in the magnitude of v. So if v is increasing, then at and v are going to be in the same direction. If v is decreasing, then at is going to be opposite to the direction of v, whereas the normal component of acceleration वो किस तरफ होता है? Towards the center. So the normal component of acceleration represents the time rate of change in the velocity's direction, and it is always directed towards the center, that is towards the point O, जो कि आपका center of circular path है. Okay, ये तो scalar बातें आ गई कि acceleration vector scalarly it would be at vector plus an vector. At का scalar magnitude alpha r आ गया, an का scalar magnitude omega square r आ गया. Okay, moving on to the vector form. I hope that the slide is visible to all of you. Blank slide. Yes, sir. बिल्कुल. Okay, blank slide आपके सामने है. अगर हम वेक्टर की बात करें तो the acceleration vector is basically dv vector divided by dt. ठीक है, स्केलर तो हमने देख लिया. थोड़ा सा वेक्टर की भी बात कर लेते हैं क्योंकि कहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको वेक्टर फॉर्म में इसको निकालना पड़े. So at is the vector, the derivative of velocity vector v. So we can write this d over dt. इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर होता है? Omega into x r. Omega cross r के बराबर. It means that you are going to take the derivative of a cross product. Any idea कैसे लेते थे derivative of a cross product? Kindly दोबारा repeat कर दें, आपकी आवाज कट गई थी. Product rule apply करते थे. Okay, so applying that product rule here, it is going to be d omega vector divided by dt cross r plus omega cross dr by dt. ऐसे ही है? Yes, sir. Okay, but what is d omega vector by dt? So it is equal alpha. It is alpha vector. So alpha cross r ये आपकी पहली टर्म आ जाएगी plus omega cross what is dr by dt? 0 क्योंकि r तो कांस्टेंट है. 0. r का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. dr by dt वेलोसिटी नहीं होती. Yes, sir. Yes, sir. So velocity अभी हमने देखा है कि velocity vector omega cross r के बराबर है. So in other words this would become omega cross r, isn't it? ठीक है. So whenever you are finding the acceleration vector, then the acceleration vector is going to be the vector sum of its tangential component, which is being represented as alpha cross r, and its normal component, which is basically omega cross r. So the total acceleration a is going to be the vector sum of at and an. Vectorically, at is alpha cross r and an is going to be omega cross r. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now, what is omega cross omega? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है. अगर आप इसी वेक्टर को उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाता है? 0. किसने कहा? ये तो आप तुक्का छोड़ रहे हैं, 0 हो जाता है. सर क्योंकि पैरेलल होते हैं ना. पैरेलल होते हैं सर. देखिए, आप थोड़ा सा दोबारा इसको जाके देखें. Once you take this omega cross r, then this is basically equal to minus omega square r. तो आप बेसिकली ओमेगा क्रॉस यानी पहले आप ओमेगा क्रॉस r लेंगे, उसके बाद ओमेगा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो डबल क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बजाय अगर आप अपना टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो आप इस ओमेगा क्रॉस r को रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा स्क्वायर r के साथ. तो देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू एज ओमेगा क्रॉस r. So whenever you are finding the
vector form of A, then A vector is going to be alpha cross R minus omega square R. So बेशक आप ये वाली नोटेशन यूज कर लें या आप ये डबल क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, आपको दोनों से सेम वैल्यू मिलेगी। इसमें फायदा क्या है सेकंड नोटेशन यूज करने में कि थोड़ा सा आपका डबल क्रॉस प्रोडक्ट का टाइम बच जाएगा और आप डायरेक्टली ओमेगा की स्केलर वैल्यू को स्क्वायर करके आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू एज ओमेगा क्रॉस आर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो अब ये हमने, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर द स्लाइड। ओके, सो अगर हम आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करें तो हमने आज बात की है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हमने किस तरह रिलेट करने हैं विद एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो you have a rigid body which is in pure rotational motion and you are being asked to determine the velocity of any point P. So the scalarly the magnitude of that velocity is going to be equal to omega r, whereas in vector form this velocity vector v would be equal to omega vector cross r vector। omega को आपने उसी राइट हैंड रूल के तहत वेक्टर फॉर्म में लिखना है, r आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आया होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे either by using the determinant method और बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि छोटा सा सर्कल बना के हम करते हैं। दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं ऑफ ओमेगा एंड आर। एंड प्लीज रिमेंबर दैट ओमेगा क्रॉस आर इज नॉट इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। तो कहीं आप ये ना हो कि आर क्रॉस ओमेगा ले लें जिससे आपका वेलोसिटी वेक्टर गलत आएगा। वैसे ओमेगा क्रॉस आर किसके बराबर होता है? आर क्रॉस ओमेगा के या कोई और चीज के बराबर होता है? स्टैटिक्स याद करें दोबारा। नेगेटिव हो जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस आर शुड बी इक्वल टू minus r cross omega, isn't it? ऐसे ही है। ओके, सो इस तरह आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में जो है फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को अगर हम स्केलर फॉर्म में देखें तो उसके दो कंपोनेंट्स, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसका स्केलर मैग्नीट्यूड अल्फा आर के बराबर है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसका स्केलर मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में a इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में, विच रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट, प्लस ओमेगा क्रॉस आर जो कि आपका नॉर्मल कंपोनेंट है। इस नॉर्मल कंपोनेंट को आप चाहें तो बजाय इसके कि डबल क्रॉस प्रोडक्ट में अपना टाइम जाया करें, आप इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर आर से भी जो है वो निकाल सकते हैं। ये चीजें तमाम क्लियर है हर एक को? जी, आप लोगों की आवाज बिल्कुल ही गायब है। यस सर। चलें, अब थोड़ा सा हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। आज अभी 12:05 तो हो चुके हैं, प्रोबेबली हमें एक ही प्रॉब्लम का टाइम मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल 16-1 टुडे। बाकी एग्जांपल्स हम कल सॉल्व करेंगे और कल ही फिर हम जो है वो जनरल प्लेन मोशन के हवाले से भी उसकी मैथमेटिक्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग विद एग्जांपल 16। क्विज कौन से टॉपिक से? मैं भी आपको क्विज आखिर में जो है वो रिपीट करता हूँ, पहले आज का लेक्चर खत्म हो जाए। कौन सी स्लाइड भी है? जी जी, मैं आपको क्विज के हवाले से आज के लेक्चर के एंड पे दोबारा रिपीट कर दूंगा कौन से टॉपिक से किस किस उससे होगा, ठीक है? Okay, so starting with example 16-1, we have a cord which is being wrapped around a wheel which is initially at rest as shown to you. So आपके पास एक wheel है जिसको आपने उसके center से ground कर दी है. So the motion which is possible in this wheel is that of pure rotation about its center point O. So you have wrapped a cord around this wheel. Initially the wheel is at rest. You applied some force on the cord which gives an acceleration of 40 meters per second square as shown to you in this figure. You need to determine as a function of time the angular velocity of the wheel. So you need to determine omega as a function of time. And in the second part, you need to determine the angular position of this line OP. So second part में आपको एक तरह से कहा जा रहा है कि आपने theta as a function of time के तौर पे find करना है. So you need to determine omega and theta as a function of time. The wheel is initially at rest. By applying some force on this cord, it gives an acceleration of 40 meters per second square to this cord. Okay, first of all, is it total acceleration or any component of acceleration? Component of acceleration. It is the component of acceleration. So which component is this one? It is the tangential component of acceleration. So basically the tangential component of acceleration is given to you as AT equal to 40 meters per second square. So how you are going to determine omega? Tangential component किसके बराबर होता है? स्केलर फॉर्म में अगर हम देखें तो अल्फा आर के बराबर होता है, isn't it?
तो इसके हिसाब से अगर देखें अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा वुड बी इक्वल टू 4/r into t. What is r here? 0.2. So alpha would comes out to be 20t radians per second square. So once you have found this alpha, how you are going to find omega? Alpha क्या होता है? इंटीग्रेशन Alpha is d omega by dt. It means कि आपके पास d omega जो है, it is going to be 20t dt, and then you are going to integrate both sides of this equation from 0 to omega because the wheel was at rest, from 0 to t. So once you integrate it, omega would comes out to be 20t square over 2, or it would be equal to 10t square radians per second. Is this clear to all of you? यस सर ठीक है. सो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपने डिटरमिन कर लिया. ओमेगा इज 10t स्क्वायर रेडियंस पर सेकंड. फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा होता कि t इक्वल टू 1 से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ t की 1 वैल्यू पुट कर लेते, आपको ओमेगा की रेलेवेंट रेडियंस पर सेकंड मिल जाती. ओके, व्हाट अबाउट पार्ट बी? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा. So since omega is basically d theta over dt, it means कि आपके पास d theta आ जाएगा 10t square dt, and then you integrate it from 0 till theta, from 0 till t, you will get theta to be equal to 10t cube over 3. So you can write it 3.33 t cube radians. Is it clear to all of you? ठीक है, तो इस तरह आपने थीटा फाइंड कर लिया. यही अगर मैं आपको थीटा दे देता, यू डिफरेंशिएट इट वंस, यू आर गोइंग टू गेट ओमेगा, यू डिफरेंशिएट इट वंस मोर अगेन, यू आर गोइंग टू गेट अल्फा. तो बिल्कुल ये उसी तरह है जिस तरह आपको s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता, आप एक दफा डिफरेंशिएट करते आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता, एक और दफा डिफरेंशिएट करते आपको a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता. ऑल्टरनेटली अगर आपको a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता, आप एक दफा इंटीग्रेट करते, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता, एक और दफा इंटीग्रेट करते तो आपको s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So we are going to stop here क्योंकि 12:12 हो गए. So probably the next problem is not going to be solved in the remaining time. So we are going to stop here. इंशाल्लाह 16-2 से onward हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. जहां तक कल क्विज का है कल का, तो वो मैंने पहले भी रिपीट किया था. आपके सीआर को भी मेरे ख्याल में मैंने वीकेंड बताया था. द क्विज इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो इन टुमारोज क्लास, and the topics are going to be the first 2 topics of chapter number 15, which is प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसमें इम्पैक्ट शामिल नहीं है, जिसमें से आपने प्रोबेबली असाइनमेंट भी सबमिट कराई है, वो शामिल नहीं है. आपके पहले 2 टॉपिक्स जो है चैप्टर नंबर 15 के, उसमें से कल क्विज होगा. इज इट क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू? जी सर. और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी जो पूछना चाहते हो आज के लेक्चर के हवाले से या क्विज के हवाले से? एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये अल्फा और नॉर्मल एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? देखिए, अल्फा और नॉर्मल एक्सेलरेशन, अल्फा इज बेसिकली द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी. ये पूरी रिजिड बॉडी जो है, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. जो आप an की बात करते हैं, वो लीनियर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है. इन द उसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फुट पर सेकंड स्क्वायर होंगे. तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक लीनियर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है. मसलन अगर मैं इस फिगर पे जाऊं, इस फिगर को थोड़ा गौर से देखें, ये 2D में आपको नीचे फिगर नजर आ रही है. जी सर. तो आपके पास ओमेगा और अल्फा जो है वो इस डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज. अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है और एंगुलरली एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज ही होगा, वरना काउंटर क्लॉकवाइज होगा. और आपका ए जो है वो इस प्लेन में लाई करेगा एन और एटी की फॉर्म में. सो एक एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक लीनियर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है. सर मैथमेटिकली तो इस तरह डिफरेंस हो जाता है, लेकिन जो कंसेप्चुअली होता है, मतलब रोटेट कौन करता है और मूव कौन करता है सर. अच्छा चलें, मेरा आपसे अगला सवाल, आपके सवाल की क्लैरिफिकेशन, ओमेगा और वी में क्या फर्क है? सर यही तो पता नहीं है ना सर. वो ओमेगा सर वो इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट. देखिए, आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी, यानी 2 डिफरेंट चीजें है ना. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, आपका ओमेगा जो होता है वो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है कि ये रिजिड बॉडी कितने रेडियंस पर सेकंड के साथ रोटेट कर रही है.
और उसमें से अगर कोई एक पॉइंट मैं पिक कर लूं उस रिजिड बॉडी का, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, इसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहूं तो दिस लीनियर वेलोसिटी V इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ओमेगा r के बराबर होगा। तो एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी है। इसी तरह अल्फा और AT/AN है। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, AT and AN आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। Okay, sir, I got it.